This is the third part of Kierkegaard's Fear and Trembling. In the last two videos हमने रिव्यू किया था कि Kierkegaard एक पैराडॉक्स बयान करता है अपनी किताब Fear and Trembling के अंदर, और वो रिकाउंट करता है वो biblical narrative, वो biblical story about Abraham and Isaac and how God commanded Abraham to sacrifice Isaac. Ethically speaking, it is not right to sacrifice someone or kill someone, but when God commanded Abraham to sacrifice Isaac, Abraham का faith इस लेवल का था कि he was ready to sacrifice his own son because he understood that that was a test of his faith. जोहानस द सिलेंशियो, जो एक सीडोनिम है जो कीरकेगार्ड इस्तेमाल करता है अपनी किताब में, वो कहता है कि in this instant, in this case, the single individual rose above the ethical, which is the universal, and he now stands in an absolute relation to the absolute. This is precisely the paradox जिसके बारे में कीरकेगार्ड बात करता है. ये पैराडॉक्स ये है कि either the single individual stands in an absolute relation to the absolute or Abraham is done for. या तो the religious demands that the single individual makes himself superior to the ethical or the universal, या फिर Abraham was a murderer. This is what Johannes the Silencio is essentially saying. इस तीसरे पार्ट में आई थिंक सो इट विल नॉट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. इसमें बस आई विल ट्राई टू एनालाइज द बुक. किताब की पहला पेज जो है इट सेज व्हाट टार्क्विन द प्राउड सेड इन हिज गार्डन विद द पॉपी ब्लूम्स वाज अंडरस्टूड बाय द सन बट नॉट बाय द मैसेंजर. ये बिल्कुल प्रीफेस से पहले आता है किताब के अंदर, एंड what it refers to is the story of the Roman emperor Tarquinius Superbus. Tarquinius Superbus अपने बेटे को भेजता है गैबी एक सिटी का नाम है, और उसका बेटा जाके वहाँ पे बेसिकली एक राइवलरी होती है, राइट. बट Tarquinius Superbus का बेटा जाता है गैबी की सिटी और वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है कि I fought with my father and I'm no longer loyal to him, और मैं यहाँ पे आके सर्व करूँगा. वो आहिस्ता आहिस्ता लॉयल्टी क्रिएट करता है और वहाँ पे सबका ट्रस्ट जीतता है टार्गेनियस सुपरबस का बेटा. एंड वंस दैट्स डन, जब वो सारे अपने मैटर्स रिजॉल्व करता है और वो देखते हैं अच्छा लोग अब मुझे यहाँ पे गैबी की सिटी में ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये जो बेटा है ये टार्गेनियस सुपरबस अपने अब्बू को एक ख़त लिख के भेजता है मैसेंजर के थ्रू. अब वो मैसेंजर पहुँचता है टार्गेनियस सुपरबस के पास और टार्गेनियस सुपरबस को शक होता है कि यार इस मैसेंजर के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. तो टार्गेनियस उसको अपने गार्डन में ले जाता है और उसके साथ कुछ भी नहीं बोलता, बस ही डज समथिंग और वो कहता है तुम चले जाओ. व्हाट टार्गेनियस डज इज़ कि वो अपने गार्डन में जो सबसे टॉलेस्ट पॉपी फ्लावर्स होते हैं ना, पॉपी ब्लूम्स होते हैं, उनको अपनी तलवार से काट देता है. ही कट्स द टॉलेस्ट पॉपी ब्लूम्स इन द गार्डन एंड ही सेज कि जाओ जो मैंने किया है, जब बस ये जाके एज इट इज़ बता देना मेरे बेटे को, वो समझ आएगा. तो उसका जो बेटा होता है वो समझता है अच्छा कि आई हैव टू किल द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ गैबी, दैट इज़ व्हाट माय फादर वांट्स मी टू डू. लेकिन मैसेंजर था, उसको तो समझ ही नहीं आई कि उसने क्या किया. तो इन शॉर्ट, as the quote here says, what Tarquin the proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger. The son understood what his father was trying to say, but the messenger never understood. आप किताब में पढ़ते हो तो in Fear and Trembling, Søren Kierkegaard is trying to say कि a person outside of faith will not understand or be able to resolve this paradox. ये जो paradox है कि either the single individual stands in an absolute relation to the absolute or Abraham is a murderer. This paradox will not be resolved until and unless you are inside that sphere of faith. If you do not have faith, if you have not taken that leap of faith, if you have not performed the double movement, the movement of infinite resignation and the movement of faith, if you are not a knight of faith, you will not understand or be able to resolve this paradox. So again it refers back to जो preface से पहले ये quote लिखा हुआ है about Tarquinius Superbus कि only those people will understand it who are of faith. Kierkegaard, I believe he's one of my favorite prose writers.
और वो बहुत आयरनी का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर. आई टॉक्ड अबाउट हाउ फर्स्ट पार्ट के शुरू में कि ही ब्रोक ऑफ हिज एंगेजमेंट विद रेजिना ऑल्सन. उसकी वजह मानी जाती है कि ही थॉट कि उसकी जो एथिकल ऑब्लिगेशन है टू हिज फैमिली और टू बी वाइफ रेजिना ऑल्सन, वो रिकनसाइल ना हो पाती विद हिज इंटेलेक्चुअल हायर ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ एंड टू हिज वर्क. वो इस किताब फेयर एंड ट्रेम्बलिंग के अंदर बार बार एग्जाम्पल्स देता है ऑफ डिफरेंट पीपल हु हैड टू सेक्रीफाइस देयर लव और हु हैड टू सेक्रीफाइस देयर बिलव्ड फॉर द एथिकल और इन सम केसेस फॉर द रिलीजियस एज वेल. और इस कहानी इस अब्राहम की कहानी के अंदर भी अब्राहम वॉज कमांडेड बाय गॉड to sacrifice his son which was his dearest possession, because it was a test of his faith. He had to transcend in that spiritual journey, जिसकी वजह से it was a test of his faith and he had to give up what he loved the most. The Kierkegaard, I just choose to believe that there's something more to this. There's something more to this book than what appears, and with his broken engagement as well, you could see it this way कि he felt कि he could not become more spiritual or he could not pursue that path if he had that burden of having a family, which was why he broke off his engagement, and which is partly why I think कि वो बार बार इस तरह की हमें एग्जाम्पल्स सामने कहानी की सूरत में पेश करता है. Now what I would like to turn my attention to is कि स्पेशली आफ्टर द एनलाइटनमेंट वेस्ट में एक स्पिरिट ऑफ रीज़न जागी है विच काइंड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स हैव चोजन टू अपहोल्ड. और इसकी वजह से एक आहिस्ता आहिस्ता एक बाइनरी पैदा हुई है बिटवीन रीज़न एंड फेथ कि आइदर यू कैन साइड विद रीज़न और यू कैन साइड विद फेथ. ये वही डिबेट है जो क्रिएशनिज्म और एवोल्यूशन के बीच में सालों से चली आ रही है, और ये कुछ हद तक कियरकेगार्ड ख़ुद भी एडमिट करता है अपनी किताब आइदर और के अंदर. कियरकेगार्ड ये कहता है कि रीज़न अलोन हमें कन्विंस नहीं कर सकती कि खुदा है या नहीं है. हमें खुदा की एग्जिस्टेंस पर पूरा यकीन लाने के लिए हमें एक लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी, और हमें रैशनैलिटी किसी भी तरह की हेगेलियन सिस्टम स्पेशली हमें कन्विंस नहीं कर सकता. रीज़न हमें कन्विंस नहीं कर सकती कि खुदा है या नहीं है. हमें वो लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा. इसकी वजह से आप देखते हो कि किताब के अंदर कियरकेगार्ड खुद भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन द एथिकल, जो सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से जो एथिकल नॉर्म्स आपके बन जाते हैं, दैट इज़ द एथिकल, एंड इट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द रिलीजियस एज वेल. ही सेज कि द एथिकल इज़ द यूनिवर्सल एंड यू हैव टू ट्रांसेंड दैट इफ़ यू आर टू हैव फेथ इन द रिलीजियस. नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, बेसिकली अगर आप मानते हो कि अर्थ फ्लैट है, द अर्थ इज़ फ्लैट, तो दैट इज़ योर सब्जेक्टिव ट्रूथ, राइट? इवन दो द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज़ कि द अर्थ इज़ राउंड और द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. द अर्थ विल नॉट बी फ्लैट इवन इफ़ यू डू बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही रहेगी, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ही रहेगा, बेशक आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ अपना हो कि नहीं यार द अर्थ इज़ फ्लैट. उसी तरह इफ़ गॉड एग्जिस्ट्स ऑब्जेक्टिवली, if the objective truth is that God exists, तो बेशक रिचर्ड डॉकिंस माने कि यार खुदा नहीं है, या सैम हैरिस माने कि खुदा नहीं है, तो उनके मानने से खुदा की नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो जाएगी. खुदा विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो सम इंडिविजुअल्स और मैनी इंडिविजुअल्स बिलीव इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो इन द केस कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो एथिकल है वो ही यूनिवर्सल है. तो इन दैट केस अब्राहम वाली स्टोरी में ही रियली डिड ट्रांसेंड द एथिकल टू ग्रैस्प ऑन टू द रिलीजियस, एंड ही रियली मेड दैट लीप ऑफ फेथ. लेकिन इफ़ गॉड एग्जिस्ट्स एंड देयर इज़ एन एब्सोल्यूट ड्यूटी टू गॉड, तो आपकी इंटायर ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही चेंज होगी, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हैज़ चेंज्ड. इफ़ गॉड एग्जिस्ट्स फॉर एवरीवन. 4 लोग नहीं मान रहे खुदा की एग्जिस्टेंस को, दैट वुडंट मैटर, दैट वुडंट चेंज द फैक्ट, द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ दैट गॉड एग्जिस्ट्स. तो इफ़ गॉड एग्जिस्ट्स एंड देयर इज़ एन एब्सोल्यूट ड्यूटी टू गॉड, देयर इज़ नॉट ओनली अ टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल बट ऑल्सो अ मेटाफिजिकल ऑगमेंटेशन ऑफ द एथिकल इटसेल्फ. क्योंकि जो रिलीजियस है इन कियरकेगार्डियन टर्म्स,
it becomes now the irrational because God exists, and all of one's actions are to be carried out keeping that as the first line of argument. तो Abraham की जो willingness थी to sacrifice his son, it did not denote a murderous act but a holy act, because अब जो religious है it has become the universal. बेशक for the majority of the population God does not exist, but because God exists objectively, that is the objective reality and the objective truth as well. तो हमारी जो understanding है of the ethical, which we believe to be the universal, it is not the universal objectively, the religious is the universal. And क्योंकि God exists in this case, and that is our objective reality and the objective truth, so the religious now does not it does not transcend the ethical, which we believe to be the universal. It becomes a part of the ethical and it becomes the universal as well. So if God exists, there is an absolute duty to God, because we all serve God, right? So if there is an absolute duty to God, so when God commanded Abraham to sacrifice his son, his duty was to God. His duty was not to societal norms or to what society deemed to be ethical. Even though society deems कि यार to sacrifice anyone or to kill anyone or to sacrifice one's own son is wrong, it should not be done, it is evil, his duty was to God, and God was testing his faith, so it was right for him to sacrifice his son, even if God commanded it, even if God demanded it. So that paradox would not exist if God exists objectively. Moreover, आप देखोगे कि एथिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म की एक काफ़ी हद तक एक टेंडेंसी है, एक इंक्लिनेशन है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइफ ऑफ फेथ एंड द लाइफ ऑफ रीज़न, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन रीज़न एंड फेथ इटसेल्फ, और इनकी एक बाइनरी क्रिएट हो गई है जो आई थिंक सो कीरकेगार्ड ने अडॉप्ट की इन लोगों से, इन वेस्टर्न थिंकर्स से कीरकेगार्ड ने अडॉप्ट की, एंड ही डिड नॉट, even though he did develop it, he developed it into a leap of faith, but I personally think कि Kierkegaard did not give it much thought, or perhaps he did, I might be wrong about it, लेकिन Kierkegaard कहता है कि you need to make that leap of faith into the unknown if you are to believe in God, if you are to be convinced of God's existence. Reason आपको convince नहीं कर सकती है कि खुदा exist करता है या नहीं करता, but अगर आप अब्राहम की स्टोरी को फुली कॉन्टेक्चुअलाइज करो तो was it not कि अब्राहम वो convinced himself कि God exists by looking at the stars. अब्राहम ने खुदा सितारों को देखा, आसमान पे देखा और सूरज को देखा पहले. अब्राहम थॉट कि अच्छा ये खुदा है. फिर सूरज ढल गया, चांद आ गया, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं सूरज खुदा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा चांद खुदा हो सकता है. फिर चांद भी ढल गया, सूरज निकल आया. फिर he went through that contemplative process, he went through reflection, और वो एक काफ़ी लंबा अरसा था, एक काफ़ी लंबा process था. It wasn't कि he was born a prophet. He gained that aspect, he gained that element by contemplation, by reasoning, by rationality. सितारों को देखकर और सोचकर about the creation of the universe, दुनिया की तख्लीक के बारे में सोचकर ही came to the conclusion कि खुदा है और सिर्फ एक खुदा है. बुतों का आइडलेटरी का ज़माना था. his fathers, his parents, the society overall in general used to worship idols. सारे बुत परस्त थे. He came to the conclusion that God exists, a supreme creator exists, one supreme creator exists, and he came to that conclusion not by a leap of faith but by a leap of reason, I would say, because he had nothing to have faith in. He had nothing to have faith in that he would take a leap of faith. He did not know what God was, right? वो देख नहीं सकते थे खुदा को, वो सिर्फ आसमानों को देख कर और सोच कर और इस पूरी जर्नी से, कॉन्टम्पलेटिव रिफ्लेक्टिव जर्नी से गुजरने के बाद ही केम टू अ कंक्लूजन कि गॉड एग्जिस्ट्स, और ये सिर्फ रैशनैलिटी और रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हुआ था. तो व्हेन such atheistic existentialists या फिर enlightenment thinkers या even Kierkegaard to some extent, जब these writers say कि एक binary है between reason and faith, between logic or faith, so it kind of does not add up, right?
Abraham took that leap of reason by having faith in reason. हम लोग, the majority part of us, we all inherit faith from our parents, right? और हम इस केस में you can say कि we take that leap of faith by thinking कि अच्छा हमारे माँ बाप गलत हो नहीं सकते, so whatever religion they follow, we'll follow that as well, right? So we take that leap of faith, but you could come back at it by thinking कि हम, if we did that and if we inherited that and we took that leap of faith by believing कि our parents could not be wrong, so we'll follow their religion, we are only Muslims or Christians or Hindus by name, right? And unless we convince ourselves of God's existence, we cannot move ahead in our spiritual journey, and that only has to be done. It only can be done by reason alone, by logic alone. So when I was reading this book, it obviously it is a remarkable piece of work, and I mentioned, I'm fond of Kierkegaard's prose, or I would place Kierkegaard somewhere near the same intellectual league as Nietzsche, but due to some intellectual differences, I think I won't. But nevertheless, एक brilliant writer है Kierkegaard. लेकिन this element which I just discussed in his writings, कि he somehow inherited or adopted those values, वो जो binary of faith versus reason, he adopted that and he further developed it into a leap of faith. While I was expecting from an intellectual like Kierkegaard that he would, like a true theologian, he would expand it and he would emphasize on how you don't need that leap of faith. You need that leap of reason. It's not that the leap of faith takes you into a realm which is all the more irrational, like those atheistic existentialists claim it to be. It is a realm of rationality. But like in the case of Abraham, he took that leap of reason, and only after he initially made that leap of reason was his faith put to the test. जब revelation आना शुरू हुई, फिर God commanded him to sacrifice Isaac, and we know the rest of the story. Obviously, I mentioned in the first part that in the Islamic tradition, it was not Isaac, but it was Ishmael, who God commanded Abraham to sacrifice. Lekin we won't get into that debate, of course. But in the biblical account, of course, like I said, it is mentioned Isaac. So God commanded Abraham to sacrifice Isaac, and it was only after Abraham went through that entire contemplative, reflective phase, जब उन्होंने सितारों को देखा, आसमान को देखा, and through reason alone he convinced himself कि yes, God exists. And I believe कि we all need to do that. हम तकरीबन सारे ही हम inherit करते हैं अपने माँ बाप से अपना religion, right? हमारा faith, and we take that leap of faith, like I said, कि हमारे माँ बाप गलत नहीं हो सकते, तो we'll just inherit it and we'll just continue in this path, right? Lekin if we are to be sure of God's existence, this is where I differ in my thought from Kierkegaard. Obviously, I could be wrong. मैं क्या ही जानता हूँ, मैं 22 साल का लड़का हूँ, मुझे क्या ही पता है. But when I was reading Fear and Trembling, मैंने बार बार नोटिस किया कि लीप ऑफ फेथ की बात करता है Kierkegaard अपनी दूसरी किताबों में भी, बट वो जो एथिकल और रिलीजियस का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है इस किताब में, आई नोटिस दिस कि he should have gone through the other route, right, of destroying that binary between faith and reason. And like I was saying कि हम primarily inherit करते हैं from our parents our faith, but if we are to be convinced of God's existence, we have to come at it rationally. हमें individually, singularly, हमें as a single individual, we will have to convince ourselves of God's existence or non-existence through reason alone. We cannot take that leap of faith, क्योंकि faith will not convince us of faith itself, right? It's contradictory, it's a paradox. Only reason alone, rationality ही हमें सिर्फ convince कर सकती है कि खुदा है या नहीं है. Even though we were born Muslims or we were born Christians, that could be the case. But if we are to
become the knight of faith in the Kierkegaardian sense, so we would only reach there by reason, and then we would take another leap of faith. But the initial leap would always have to be the leap of reason. When we turn from an inheritor of faith to, you could say, a true knight of faith, कि आपने inherit किया religion from your parents or whatever, but then you become a true Christian, or you become a true Muslim, or whatever religion you follow. You become a true follower of your religion by convincing yourself of God's existence or non-existence rationally, and then you decide what religion should you subscribe to, and then you compare all the religions, और फिर आप खुद एक comparative study करते हो, साल लग जाते हैं इस पे, and then you compare, and then you come to the conclusion, अच्छा, this is the best religion out of all the options that I have available, and then you become a true Christian or a true Muslim or whatever, right? And that has to be done through rationality. Faith cannot take you there. So yeah, like I said, I could totally have it wrong. मुझे क्या ही पता है, I know that I know nothing. Obviously I'm quoting Socrates here, but that's the only thing that makes sense, right? I admit कि मैं ये videos बनाता हूँ, and this only serves as a journal for me, कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद मैं ये videos दोबारा देखूँ, and I understand कि मैं कितना grow किया हूँ intellectually, how has my thought progressed. मैं किताबें पढ़ तो रहा हूँ, but my thought is progressing as well, and I when I look back at these videos, शायद मैं आज से 5 साल बाद ये वीडियो देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये मेरा जो एनालिसिस था ये टोटली BS था, ये टोटली गलत था, एंड आई वुड लव दैट. आई लव टू बी रॉन्ग, क्योंकि it is only by consistently being wrong, having been wrong in the past, that you can find the truth. मैं अभी कुछ 8-9 महीने पहले एक रिसर्च पेपर लिख रहा था about evolution, about reconciling the differences between evolution and creationism, और मैंने वो लिखा रिसर्च पेपर, and I have this habit कि whenever I write a research paper or an article, तो मैं उससे डिटैच कर लेता हूँ अपने आप को कुछ हफ्ते के लिए, और मैं 2 या 3 हफ्ते के बाद जब मैंने उसको दोबारा पढ़ा, आई वॉज लाइक कि मैंने क्या 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 किया है मैंने इसमें. मेरा जो सेकंड प्रेमिस था, इट वॉज टोटली फ्लॉड, एंड आई वॉज डीपली फ्रस्ट्रेटेड, बट आई लव्ड दैट फीलिंग एज वेल, कि ओके, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, एंड दैट फीलिंग ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. सो आई लव बीइंग रॉन्ग. और वो पेपर इवन तो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, बट इवन दो आई टर्नड आउट टू बी रॉन्ग, दैट स्ट्रगल फॉर द ट्रूथ इज़ स्टिल ऑन गोइंग. मैं पिछले 8 महीने से साथ साथ उस चीज़ को भी लेकर चल रहा हूँ. अगर मैंने उसको ख़त्म करके रख दिया होता, अगर मैंने अपनी गलती रियलाइज़ ना की होती, आई वुड हैव शॉफ्ड दैट टॉपिक टूवर्ड्स अ डिस्टेंट कीप्स ऑफ माई माइंड, और मैं उस पर कभी वापस ना आता. आई वुड हैव थॉट टू माई सेल्फ कि अच्छा, आई हैव क्रैक्ड दिस, आई हैव अंडरस्टूड दिस, एंड देन आई वुडंट हैव corrected myself. So that was it for this video. In the first 2 parts, I went through a summary of Fear and Trembling. Obviously, it is better कि आप पूरी किताब खुद पढ़ो. It's an amazing piece of work. And yes, like I said, I love to be wrong. Let me know in the comments if someone has any thoughts about this, or what they think about what Kierkegaard talks about in his book. So yeah, that is it for this video.